Good evening, students. Today we are going to discuss the subject MSCI 26. It is about risk analysis, how to identify risk, how to avoid risk, what to do, okay, what steps we can take to avoid the risk. All these things we have to study over here. Okay, we'll study here. So what is risk analysis? It is the process of systematically identifying and assessing the potential risks and uncertainties that occur when trying to achieve a certain goal. जब कोई गोल को अचीव करते हैं तभी कुछ ना कुछ रिस्क आते हैं एंड देन फाइंडिंग द फिजिबल स्ट्रेटेजी फॉर मोस्ट एफिशिएंट कंट्रोलिंग दोज रिस्क। जो भी रिस्क आते हैं वो उसको कंट्रोल करने का टेक्निक्स हम ढूंढते हैं। रिस्क में क्या तीन चार डेफिनेशन है। रिस्क एस्टिमेशन, दिस इज द प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस ए मेजर of the level of health, property, or environmental risks being analyzed. Risk estimation contains the following steps: frequency analysis, consequent analysis, and their integration. ओके, तो रिस्क एस्टिमेशन में क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कितने कितने प्रॉब्लम्स आ रहे, कितने बार आ रहे, फ्रीक्वेंसी यू हैव टू चेक द फ्रीक्वेंसी of the risk, and consequences, what are the consequences of the risk and their integration. And risk analysis, it is the use of available information to estimate the risk to individuals or population, property, or the environment from hazards. That is risk analysis. Risk analysis generally contains the following steps. What it involves? It involves scope definition, hazard identification, and risk estimation. ओके, रिस्क एस्टिमेट, हाँ, रिस्क एनालिसिस में क्या क्या होता है, स्कोप डेफिनेशन, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एस्टिमेशन। और रिस्क एस्टिमेशन में क्या क्या होते हैं, ये वर द फॉलोइंग: रिस्क फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस, एंड देयर इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थिंग्स. The risk evaluation, the stage at which values and judgments enter the decision process explicitly or implicitly by including consideration of the importance of the estimated risk and the associated goal, associated social, environmental, and economic consequences in order to identify a range of alternatives for managing the risk. रिस्क को इवेल्युएट करके हाउ टू मैनेज द रिस्क, ये पूरा रिस्क एवेल्यूएशन में आते हैं। रिस्क असेसमेंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क इवेल्यूएशन, दोनों। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट, क्या होता है, इक्वल टू रिस्क एनालिसिस प्लस रिस्क इवेल्युएशन। Then risk control or risk treatment, the process of decision making for managing risk and the implementation or the enforcement of risk mitigation measures and the re-evaluation of its effectiveness from time to time using the results of risk assessment as one input. What is risk assessment? Mitigation. What is risk mitigation? Mitigation means हम कितना रिस्क झेल सकते हैं, that is risk mitigation. Understood? Enforce of risk measures and reevaluation of the effectiveness from time to time. From time to time हम उसके क्या measures ले सकते हैं, how to control the risk. So all these things are in risk control or risk treatment. Risk management, it is a complete process of risk assessment and risk control. Why risk analysis is done? In business and environment, in a government, one faces having to make decisions and with uncertain outcome all the time. Understanding the uncertainty can help us make a much better decision. इसलिए रिस्क एनालिसिस करते हैं for better decision. ठीक है, we can think of two forms of uncertainty. The first is a general sense. First कौन सी है, this one. First is a general sense that the quantity we are trying to estimate has some uncertainty attached to it. Then we have risk events, which are random events that may or may not occur and for which there is some impact of interest to us. ठीक है, ये these are the two forms of uncertainty. We can distinguish between the two types of events as risk and opportunity. Is very important this thing, risk and opportunity, very important. रिस्क क्या होते हैं, रिस्क इज एन इवेंट that may possibly occur and if it did occur would have a negative impact on the goals of the organization. Thus, a risk is composed of three elements: the scenario, its probability of occurrence, the size of the impact if it did occur. Okay, an opportunity is an event that may possibly occur and if it did occur would have a positive impact on the goals of the organization. Thus, an opportunity is composed of same three elements of as a risk. तो रिस्क और अपॉर्चुनिटी इसको आपको करना है, पढ़ना है. These are all from the books
जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आई आई कॉपीड हियर एंड आई एम रीडिंग इट आउट एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इट। यही आएंगे पेपर में। पर्पस ऑफ रिस्क एनालिसिस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्क एनालिसिस, ये सारे आप पढ़ोगे। रैंक द क्वेश्चंस दैट नीड आंसरिंग फ्रॉम क्रिटिकल डाउन टू इंटरेस्टिंग, डिस्कस विद द रिस्क एनालिस्ट द फॉर्म ऑफ द आंसर, एक्सप्लेन व्हाट आर्गुमेंट्स विल बी बेस्ड ऑन these outputs. Okay, explain the target audience, discuss any possible hostile reactions, figure out a time dial, figure out the priority level, decide on how regularly the decision maker and risk analyst will meet. ये सारे important है। Then types of risk analysis, qualitative analysis and one is quantitative analysis. Qualitative quantitative risk assessment provides a quantitative estimation of the risk posed as well as enabling risk mitigation methods be evaluated so that the risk can be reduced to acceptable levels. और quantitative क्या होते हैं? Does this as well as identifies the specific envelope in which the losses and safeguards exist. It does, however, present its result in a management-friendly form of monetary values, percentages, and probabilities. Quantitative में probabilities in the form of monetary values, percentage and probabilities. ये important. This is important. This is important. Quantitative के लिए स्पेशली मॉनिटरी वैल्यूज, परसेंटेज एंड प्रोबेबिलिटीज यही यूज होते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स, इंटरव्यूइंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपर्ट जजमेंट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता ही है, ये कौन सी होंगे, बाइनोमियल होंगे या पॉइजन होंगे या नॉर्मल होंगे। दीज आर द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। होप यू हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स इन स्टैटिस्टिक्स। Now we are coming to qualitative analysis. Qualitative improves the awareness of the information system security problems and posture of the system being analyzed. It helps in the identification of the assets and resource at risk vulnerabilities that might allow the threats to be realized, safeguards already in place, and those which may be implemented to achieve an acceptable level of risk and increase overall awareness. This is actually about awareness. Qualitative means it's not mathematical. It is to create awareness, simple. Performing qualitative risk analysis is the process of prioritizing risk for further analysis or action and accessing and combining their probability of occurrence and impact. Okay, ये आप तो थोड़ा पढ़ लेना. It assesses the priority of identifying risk using the relative probability or likelihood of occurrence, the corresponding impact on project objectives if the risk occur, as well as other factors such as the time frame for response and the organization risk tolerance associated with the project constraints of cost, schedule and scope and quality. Scope and quality. तो आपको ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होते क्या है, इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मिंग रिस्क एनालिसिस, उसमें क्या क्या होते हैं, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन हम गैदर करेंगे इसमें, ये थोड़ा डिटेल्स में आप पढ़ोगे। द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट first obtain all documentation related to the policies, procedures and standards that will be used during the project. Okay, he should have a thorough understanding of the operational task required in the business environment. यहाँ पे project manager is the important thing, project manager. Okay, details about personnel assigned to the project, personnel assigned to the project vendor to or supplier contract and other pertinent information need to be scrutinized too. सब कुछ scrutinize होंगे information gathering में everything. Available metrics and output from research analysis from precious projects of a similar type and scope should be allocated. Everything, every information. जो बंदा ये प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे हैं, वो कौन कौन सा प्रोजेक्ट में काम किए, उसके सारे डिटेल्स, एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड। इसको बोलते हैं गैदरिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद एनालाइज डेटा को फिर एनालाइज करना, डेटा में कोई इशू है या समथिंग लाइक दैट। Once the project manager assembled all the relevant information and identified potential risks, he needs to classify and rank these events based on how likely they are to occur. उसके बाद कैसे वो occur होंगे, रिस्क वगैरह जो है उसको आपको ये करेंगे, नंबरिंग लेंगे, रैंक्स देंगे। रैंक 1 में ये हो सकते हैं, रैंक 2 में ये हो सकते हैं, वो सारे होंगे। Classifying the problems allows the manager to focus his efforts on controlling problems in consistent manner. Additionally,
If the problems arise that haven't been previously identified, by classifying the new problem as similar to a known issue can streamline the time it takes to correspond with a mitigation action. मिटिगेटिंग मतलब क्या, कितने वो बर्दाश्त कर सकता है, कितना एरर से वो बर्दाश्त कर सकता है कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट. अंडरस्टूड. क्रिएट ए प्लान टू मॉनिटर एंड कंट्रोल रिस्क. एक प्लान बनाना पड़ेगा मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल रिस्क, टू कंट्रोल रिस्क. It is used by establishing preventive, detective, and coercive actions. Coercive action. They also define technical and administrative responses to problems that might occur. तो ये सब थियोरेटिकल है, आप लोगों को थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे. Utilizing their skills, knowledge, and experience, they can identify threats, rank the likelihood of occurrence, and control problems should they arise. Performing a risk assessment analysis helps coordinate a systematic response, ensure standardization, and maximize project performance. Very important ये बातें. Okay. SWOT is very important. SWOT analysis is a strategic planning method used to evaluate the strengths, weakness, opportunities and threats. SWOT का full form क्या है? Strength, weakness, opportunities and threats. Strength, weakness, opportunities and threats. ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभी पेपर में, तो यू शुड नो एवरीथिंग. SWOT मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. Is the strategic planning method used to evaluate the strength, weakness, opportunity, and threats involved in a project or in a business venture. It involves specifying the objective of the business venture or project and identifying the internal and external factors that are favorable and unfavorable to achieve that objective. This is very important. A SWOT analysis must first start क्या करेंगे? Must first start with defining a desired end state or objective. First objective को define करते हैं. Then may be incorporated, analysis may be incorporated into the strategic planning model. उसके बाद प्लानिंग करके हम उसको स्टार्ट करते हैं. Strategic planning has been the subject of much research. उसमें क्या है? Strength मतलब characteristics of the business or team that gives it an advantage over others in the industry. That is strength. Weakness मतलब are characteristics that place in the firm at a disadvantage relative to others. दूसरे से हम कंपेयर करते हैं तो क्या एडवांटेजेस होते हैं? एडवांटेज होने से स्ट्रेंथ हो गया, डिसएडवांटेज हो गया तो वीकनेस हो गया. अपॉर्चुनिटी मतलब एक्सटर्नल चांसेस और मेक ग्रेटर सेल्स or profits in the environment. Number D, threats. External elements in the environment that could cause trouble for the business. So that is a threat. उसके बाद what is successful risk assessment? What are the components of risk assessment? Successful risk assessment requires full support of senior management and must be conducted by teams that include both functional managers and information technology administrators. इसमें क्या होते हैं? Both functional managers and information सब कोई होना चाहिए for successful risk assessment. As business operations, workflow or technology change, periodic reviews must be conducted to analyze these changes, to conduct for new threats and vulnerabilities created by these changes, and to determine the effectiveness of existing controls. Components क्या क्या है इसमें? Administrative safeguard, logical safeguard, physical safeguard. क्वेश्चन आते हैं पेपर में. What are the general guidelines of risk methodology? Establish the risk assessment team, set the scope of the project. ये सारे जो C, identify assets covered by the assessment, categorize potential losses, identify threats and vulnerability, identify existing controls, analyze the data, determine cost effective safeguards, report. These are all the guidelines for risk methodology. What are the steps involved in risk analysis process? Step 1 में क्या है? Identify threat. ये सब आप लोग पढ़ोगे. Identify threat. इसमें क्या क्या थ्रेट हो सकता है? ह्यूमन से भी हो सकता है, ऑपरेशनल भी हो सकता है, रेपुटेशनल भी हो सकता है, प्रोसीजरल, फिनेंशियल. ये सारे दीज आर द टाइप्स ऑफ थ्रेट्स वी कैन से. देन नंबर स्टेप 2 रिस्क एस्टिमेट रिस्क. स्टेप 3 मैनेजिंग रिस्क. एक ही बात बार बार बोला जा रहा है. रिस्क कैन बी मैनेज इन द फॉलोइंग वेज. कैसे? बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग एसेट्स, बाय कॉन्टिजेंसी प्लानिंग, बाय इन्वेस्टिगेटिंग इन न्यू रिसोर्सेस.
रिस्क को मैनेज करने के ये 3 तरीके हैं, उसके बाद इसके बारे में आप लिखोगे। स्टेप 4 में क्या है, रिव्यूज। आफ्टर कंप्लीटिंग द रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, द नेक्स्ट एंड द फाइनल step will be review, which must be done on regular basis. The review process include conducting formal reviews or may involve testing systems and plans. The reviews are very important, most important. It is the last step. Now risk identification process. इसमें क्या है? Step 1 में identify project manager for the risk management task. Step 2, analyze the scope of the project. Step 3, examine if the project risk will bring any impact on the general business, on the company, or will cause a resources or will cause loss of resources or to the project. किस तरह का लॉस ला सकता है, किस तरह के मीन्स इम्पैक्ट हो सकता है हमारा बिजनेस में, वो स्टेप 3 रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए. बजट कैन बी कंसिडर्ड ऑन एज रोड मैप टू आइडेंटिफाई एनी फाइनेंशियल रिस्क फॉर द प्रोजेक्ट. स्टेप 5, आइडेंटिफाई द रिस्क इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. ये सारे क्या है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस स्टेप्स है. अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन मेथड्स है, इंटरव्यूज, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कंसल्टिंग एक्सपर्ट्स, स्टडी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, स्टेक होल्डर्स एनालिसिस. इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है. इंटरव्यू में क्या, हेल्प टू रिवील सेंसिटिव मैटर्स इन फेस टू फेस मीटिंग्स. लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प्स टू शेयर रिस्क विद अदर्स. इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग एक दूसरे के साथ शेयर करना. लेकिन डिफिकल्ट टू हैव गेट टुगेदर फॉर मीटिंग्स. ठीक है. कंसल्टिंग एक्सपर्ट प्रोवाइड इंडिपेंडेंट व्यू ऑन मैटर्स. एडवांटेज. डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट मोर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मे बी डिस्क्लोज्ड. मोर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज हो सकते हैं. इस तरह के एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या है, ये सारे आप लोगों को करने हैं पेपर के लिए. दिस इज ब्लॉक 1 एक्चुअली. देन मेजर इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस. क्या क्या है, रिस्क रजिस्टर, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, रिस्क स्कोप मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट, एसेट्स. ये सारे टॉपिक, ये सारे एक आपको एक रीड करना, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. जो मैं कर रहा हूँ वही पढ़ना है पूरी बुक में, और कुछ जरूरत नहीं है. बिकॉज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैव गैदर्ड ओवर हियर. द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज इन रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग. क्या क्या है, अवॉइड, ट्रांसफर, मिटिगेट, एक्सेप्ट. ये देखो, मिटिगेशन का बार बार बात बोल रहे थे, रिडक्शन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क इवेंट्स और नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ रिस्क इवेंट्स टू एन एक्सेप्टेबल लेवल. एक्सेप्टेबल, जितना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इतना रिस्क हम बर्दाश्त कर लेंगे, इतना रिस्क हम ले सकते हैं. हम बोलते नहीं है, हम कहीं भी जाते हैं या हम कुछ भी करते हैं तो इतना रिस्क हम ले सकते हैं. हम 100 रुपये खर्चेंगे, 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, तो 100 रुपये यदि 100 रुपये यदि मेरा लॉस हो तो इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ. ठीक है, तो दैट इज मिटिगेशन, सिंपल. देन बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट. क्वालिटेटिव पहले भी हमने किए, तो उसका बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, यू शुड गो थ्रू ऑल दिस. दिस इज ऑल फ्रॉम ब्लॉक 1. ओके, नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू कवर ब्लॉक 2. तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो मैंने उठा लिया, इसी के आपको नोट्स बनाने और पेपर में अपियर होना है. ठीक है, तो नथिंग मोर देन दिस, सिंपल. थैंक्स अ लॉट. इफ यू लाइक इट, यू कैन